अब दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में और हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड एज के टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन का टेम्परेचर के ऊपर क्या लेना देना है वो हम लोग बात करेंगे। सो द टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन reaction rates. Okay, that is what we are supposed to consider. Okay, so we start with the equation, that is K is equal to A into e raised to minus of E upon RT. This is the equation. इसे हम लोग बोलते हैं Arrhenius equation, और ये जो equation है वो लिंक करता है with the rate of the reaction along with temperature. Now यहाँ पर the K is going to be called as the rate constant. A is called as a pre-exponential factor. EA आप जानते हो, it is nothing but it's the energy of activation. Next is R is a gas constant, and temperature is T, and the units of that will be in Kelvin. Okay, 0 degrees Celsius is 273 Kelvin. So yeah, so this pre-exponential factor और rate constant, ये दोनों का जब हम लोग बात करते हैं about unit, तो unit becomes same for a first order reaction. Okay, it is what first order reaction के लिए दोनों का units remains the same. और जहाँ तक pre-exponential factor का सवाल है, it also gives us the information about the frequency of collisions. कितनी बार collisions हो रहा है amongst the reactant molecules. तो इसके बारे में भी ये A हमें information देता है. So it is also called as a pre-exponential factor, और as I said, it determines about the collision of frequency. Alright? Now, going into the next part is, if we are trying to take the logarithm of all this, then what we get is ln k is equal to minus of E upon RT plus ln A. Okay, this is what we get. अब मुझे ln को natural log को to the base 10 में convert करने का है, तो what I'll do is log to the base 10 is equal to minus of EA upon 2.303 RT plus log to the base 10 A. अब ये गौर से देखो, this is basically Y. Okay. Next is, I'll write down this in a very separate way so you understand this very well. 1 upon T. So this entire is M, this is X, and this is C. So it's an equation of y is equal to mx plus c. So now if you plot a graph like this, y-axis में क्या है? Log of k, that is the rate constant. Okay, and the x-axis is 1 by t. So you get a line like this. अब इसका जो slope है, slope is equal to minus of EA upon 2.303 R. और ये जो इंटरसेप्ट है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए. ओके, अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, बिकॉज दिस माइनस ऑफ ई अपॉन 2.303 आर इंक्रीजेस, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. यानी इसका मतलब ये हो गया कि द टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Next thing is, slope से हमें पता चलेगा how to calculate the energy of activation, because energy of activation will be now, therefore energy of activation is equal to minus of slope into 2.303 R. Okay, intercept से मुझे पता चलेगा the value of A, that is the pre-exponential factor. यानी क्या करने का अभी, therefore what we can say is A will be equal to anti-log of the intercept. Okay.
वापस से बोलता हूँ, स्लोप जो मिला हमें उसको मल्टीप्लाई करो बाय 2.303 आर, आर का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, इट इज अ गैस कांस्टेंट, तो उससे आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता चलेगा। और जो आपको इंटरसेप्ट मिला उसको अगर आप एंटी लॉग कर दो तो आपको मिलेगा क्या, ए। Okay, and that A is nothing but what? It is also called as a frequency factor or as a pre-exponential factor. Frequency factor इसलिए बोलते हैं because उससे हमें पता चलता है about the frequency of collisions. Okay, कितने वक्त, कितने टाइम के लिए रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में there is going to be what? Collisions taking place. Alright? So this is what the initial part about how is the temperature related to the rate of the reaction. मैंने आपको जैसे बता दिया, from this graph it is very clear that the temperature and the rate of the reaction is going to be directly proportional to each other. Okay? I guess आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि temperature and the rate of the reaction are directly proportional, we can be very much clear but from means of the Arrhenius equation. So Arrhenius equation, as it says, K is equal to A into e raised to minus of E upon RT. So what happens is as the temperature increases, the EA upon RT value will decrease. Okay, therefore minus of EA upon RT value will increase. क्योंकि माइनस कर दिया तो फिर ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ा तो ये अपॉन RT कम होगा। फिर मैंने उसको क्या माइनस साइन कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव क्या होगा, बढ़ेगा। So common sense है, the exponential part also will increase. Okay, this A is considered to be constant, so therefore the K will also increase. और K increase हुआ, the rate of the reaction will also increase. तो आप देख सकते हो, with the increase in temperature, there will be an increase in the rate of the reaction. Now we go into the determination of activation of energy. Okay, that is more important. Determination of what? Activation energy or energy of activation. So according to the Arrhenius equation, we have log of K is equal to log of A minus of EA upon 2.303 RT. Okay, this is the equation which we get for Arrhenius. Now we consider it as two temperatures. Say at temperature T1, we say it is K1, and at temperature T2 the rate constant is K2. Okay, where T2 is going to be greater than that of T1. So as a result of which what we get is log of, मैं यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दे देता हूँ, 1 as well as 2. अगर ये log K1 रखा तो ये आएगा T1, और यहाँ पर मैंने रखा log K2, so that is equal to log of A minus of EA upon 2.303 R T2. ठीक है, this is what we get. So now what we do is we carry out a simple algebraic form, and that is subtraction. So 2 minus 1, तो हमें मिलेगा log of K2 minus log of K1. Log A minus log A gets cancelled. Okay, so what we get now is that is equal to EA 2.303 R. Okay, this is what I'll make it as T1 minus of EA upon 2.303 R T2. समझा आप लोग को? ये 2 minus 1 है, यानी ये माइनस साइन रहेगा, ये माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, तो मैंने ऐसा किया। So log of K2 minus of log of K1, आपको मालूम होगा log A minus log B is nothing but what? Log of A upon B. तो वैसे यहाँ पर भी आएगा log of K2 upon K1 is equal to, now I keep constant EA 2.303 R, तो मुझे मिलेगा 1 upon T1 minus 1 upon T2. So that will be equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. Okay, this is what we get. So now this is the expression that we get as far as the determination of energy of activation is concerned. तो यहाँ पर मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए दो टेम्परेचर का वैल्यूज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट का वैल्यूज। तो मुझे T1 मिलेगा, मुझे T2 मिलेगा, मुझे K1 मिलेगा, मुझे K2 मिल जाएगा। ओके, R का वैल्यू तो हमें मालूम ही है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ऑलराइट, तो पहला तो ये
इससे आप समझ लो अच्छी तरीके से कि जैसे आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्हेनियस इक्वेशन. और फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, एंड आई एम श्योर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. Now my dear friends, I'll try to explain you about the effect of temperature with that of the rate of the reaction in terms of graph. Okay, now how exactly it is going to be. See, the first point is, everybody knows that kinetic energy when we talk about, which is the energy due to motion, is directly proportional to temperature. So as the temperature increases, the kinetic energy will also increase. Now if you can remember the collision theory which I was talking about, collision theory talks about two most important parameters which will make collisions effective collisions. पहला वाला है and that is the energy of the reactant molecules or the reactant colliding molecules must be either equal or greater than the activation energy. Second point is there has to be what? A proper orientation of the colliding reactant species. तो अभी हम लोग एनर्जी की जब बात करें तो what we can say is with the increase in temperature the fraction of the molecules, reactant molecules with kinetic energy greater than energy of activation increases. Okay, जैसे इससे टेम्परेचर बढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जिसका खुद का काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उसके वजह से द रेट ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज. Am I clear with this? So that more and more number of molecules, okay, which are colliding, will be entering into the reaction, and therefore the rate of the reaction increases. So let us consider two temperatures, T1 as well as T2. Okay, दो टेम्परेचर कंसिडर करेंगे हम लोग, T1 T2, such that the T2 is going to be greater than T1. अब जब दोस्तों हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो on the y-axis we are going to consider the fraction of molecules with a given kinetic energy, और यहाँ पर आएगा kinetic energy at two different temperatures T1 and T2 such that T2 is greater than that of T1. तो as a result of which जो हमें ग्राफ मिलेगा that will be like this. Okay, इस तरीके से हमें मिलेगा. Now this much area, just have a look at it. This area I call it as A and this area I call it as B. Okay, A and B. ये वाला जो है the first one, okay, and that is going to be nothing but temperature T1 और ये जो red वाला है that is T2. Okay, अभी आप देखोगे कि at T1 the fraction of the molecules which are there is nothing but that is this temperature. It's only related to what? A. But when you talk about T2, it is equal to A plus B. Okay, A भी है और B भी है, इतना है fraction of the molecules. तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैंने जैसे बोला था आपको कि T2 is greater than T1, so A plus B is always greater than A. Okay, तो इतना जो fraction of the molecules है पूरा A plus B, that is the fraction of the molecules having energy greater than the energy of activation at a temperature what? T2, which is higher than that of what? T1. Okay, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है the fraction of the molecules with a kinetic energy greater than energy of activation increases and therefore the rate of the reaction increases. Okay, so that is the reason we say that the rate of the reaction corresponding to T2
will be greater as compared to that of T1, and therefore we say that the rate of the reaction and temperature, they are directly proportional. So with this it is very clear from the graph itself that higher the temperature, greater the number of molecules which are there, which is having the effective activation energy, and thereby it gets converted into the products. और आपको तो पता ही है दोस्तों कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा. ओके और वो सब कभी होगा व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, एंड देयरफॉर टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बोले समझ में आई आप लोग को? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल?